हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की मृत्यु होनी है तो क्या उसको रोका जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहली बात, मृत्यु एक अटल सत्य है, सबकी होनी है। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की। जब कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, मेरे जुड़वा भाई, माय ट्विन ब्रदर, वी जस्ट लॉस्ट हिम। He was sleeping, and in the morning when you know my bhabhi saw him, he was not there, he was gone. And you know this shook my entire family. Or being into a passion of learning shastras and jyotish, I started my research. See, I had an idea that he has a bad time. Or jab, when you have that idea that you have somebody's having a bad time, what you do is you just start praying and doing whatever remedies from your experience, and you never think कि ऐसा हो जाएगा। आप सोचना ही नहीं चाहते हैं, आप सोचते भी नहीं हैं। And it happened, and I started researching, and I found few documents that I'll share with you. I hope you people will be intelligent enough to understand what I'm trying to tell you. This is sensitive. I'll share one of the documents from the one of the book which is known as Laghu Parashari. What does it write? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। दिस इज वन ऑफ द रिसर्चर्स। पराशर एवं जैमिनी महर्षियों ने बहुत सी आयु निर्धारण विधियों का उल्लेख अपने ज्योतिष शास्त्रों में किया है। सो हाउ the death, the life is controlled, the longevity is controlled, they have explained. This is the meaning. अभी तक शोधों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक ज्योतिषी केवल आयु खंड की स्थूलता का अनुमान लगा सकता है, which is a reality. That an astrologer can only, you know, give you an idea. Okay, can only give you an idea. Just a second, let me resume the share. Okay, okay, let me resume the share. Okay, I think I'll have to share that again. Okay, okay, all right. So it says that you know the astrologer can only get an idea of death. Okay, that probably this date. Even if you calculate accurately, you are not God. Even if you're one of the best astrologer, you are not God. You said, okay, this person can go within this frame of time. Can it be changed? That's what it says. Ki anuman, it's an idea. Even if you tell a date that person can die on this date, is still an idea. You can say, it is confirmed, then you are treating yourself as God. We can give that this time is very critical. This we can give. मान सागरी ने कहा है, भी कहा गया है कि जो मनुष्य जितेंद्रियां धर्म कर्म में निरत, कम आहार करने वाले, सो पीपल हु कैन कंट्रोल देयर इंद्रियज, पीपल यू नो जो दान दया धर्म करते हैं, चैरिटीज, राइट, एंड ईटिंग लेस. So you do all the charities, but do you eat anything which is coming, in front of you? No.
That is not controlling your indris. कुल का आचार का पालन, आचार होता है कैरेक्टर. You don't, easily give up your semen. You know, you don't waste your semen. You don't drop your semen here and there. Just trying to preserve your semen. देवताओं के भक्त, when you do mantras and pujas and you know and taking care of the संस्कृति, आपकी जो lineage है, there are certain protocols in everyone's family. You have to do this, you don't buy this thing, we don't marry these people, we don't go to these places on these days. There are some rituals that you bring from the lineage, you need to follow them. ऐसे मनुष्य गणित की आयु से अधिक जीते हैं. इसके विपरीत जो मनुष्य पाप आचरण करने वाले, लोभी, चोर, ब्राह्मण व देवों के निंदक होते हैं, उनकी असमिक मृत्यु हो जाती है. पुराणों आदि में ये भी सवित्री और सत्यवान जैसी कुछ कथाएं हैं जिसमें ये प्रमाणित होता है कि इस जीवन के कर्म भी आयु में वृद्धि या उसमें कमी कर सकते हैं. इसी कारणवश एक ज्योतिषी केवल आयु खंड की स्थूलता का ही अनुमान लगा सकता है. That was one. There was another. This is one. So one thing was there that he was my twin brother, and now he's in the better place. He's there. We love him so much, but me as a brother always used to tell him that he should take care of his health. He was a big foodie. He used to love eating fast food and everything. Eating less is one thing that everyone should follow. If you eat 3 chapatis, eat 2. If you eat 2, eat 1. If you're having 5 meals a day, especially after the age of 40, 45, have 2 meals, 3 meals. Eat only when you're hungry, not as a routine कि अब चलो दोपहर हो गई खाना खाते हैं, रात हो गई खाना खाते हैं. अगर भूख है खाइए, नहीं भूख है मत खाइए. Don't eat for the sake of eating. And there was another finding from the Shrimad Bhagavatam. And in the Bhagavatam, look at this page I've clicked. You can see it here. It says, mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Others have no control. What does that mean? That means that if you do yoga, you can increase your longevity. और योगा करेंगे नहीं करेंगे वो भी कुंडली में ही होते हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशंस. बट ऑन द सेम टाइम अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलते हैं, अपने गुरु को मिलते हैं, किसी टीचर को मिलते हैं और वो आपको कहता है कि आप ये पूजा पाठ करें, ये दान करें, आपका कैरेक्टर यू नो अच्छा हो, आप अपनी फैमिली रिचुअल्स को देखें, कम खाएं, ईट लेस. क्योंकि इसमें जब मैंने फर्दर रिसर्च की तो आपके नंबर ऑफ इयर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स डिसाइडेड नहीं होते हैं कि आपकी इस दिन को मृत्यु होगी. कभी नहीं डिसाइडेड होता. डिसाइडेड होता है कि आप कितने ब्रेथ्स लेंगे. अब एक्सीडेंट में भी ये चीज हो सकती है. नाउ एक्सीडेंट इज वन थिंग एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज नेचुरल untimely deaths. Accident is written. You can see that this person can die of an accident. वो भी भक्ति से, गुरु कृपा से उसको, मान लीजिए आपने किसी को एक्सीडेंट में बचा लिया, उसकी जो है उसकी जान बचा ली आपने. सो इफ यू डू दीज थिंग्स राइट, 100% आपका वो एक्सीडेंट का योग जो है वो खत्म हो सकता है. सो दिस इज हाउ यू कैन. और मैं ये कह रहा था कि आपकी डेट डिसाइडेड नहीं होती है. व्हाट इज डिसाइडेड इज हाउ मेनी ब्रेथ्स यू विल टेक. आपके श्वास कितने होंगे, हाउ मेनी ब्रेथ्स यू विल टेक, दैट्स डिसाइडेड.
And when that is decided, that means that you can really take care of your breath. Breath control, yoga. जब आप टेंशन में होते हो, जब आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में होते हो, आपकी सांसें तेज-तेज चलती हैं. That means you're consuming your breath. And when you are in a meditative state, you're sleeping, your breath is very slow, very slow. If you take right food, if you sleep the right amount of time, if you meditate, if your pulse is low, around 60, 65 all the time, and you live stress-free life, debt-free life, definitely you can increase your longevity. And it is written in the Shastras. I'm not saying that is why I clicked the pictures and shared with you. Shrimad Bhagavatam, you know, it has it has a lot of value. It is a truth. It explains the entire karma system. पूरी कर्म थ्योरी उसके अंदर है. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा. I'll come up with another video. Till then, हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत प्यार आप सबको.